A very good morning to one and all present, and a very special audience watching this online. Respected Principal, Mrs. Sundari Jaishankar, coordinators, teachers, beloved students, ladies and gentlemen. On the dawn of 76th Independence Day of our country, I, Chitra Kate, extend my warm greetings to all of you on behalf of DSK School and welcome you to join today's spectacular function as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements. Let us sincerely salute our motherland and its brave hearts who restored its honor and dignity. In the first place, let's request our principal, Mr. Sundari Jaishankar, and senior coordinator, Mrs. Jayashree Mohit, to hoist the national flag and offer our prayers through national anthem and flag song. Salute the flag! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Hands down! Strategy!
India's 76th Day of Independence must be celebrated with full vigor and enthusiasm. So let's kickstart the celebration of this special day. Our students have picked up the beats and rhythms of Legend dance to showcase their jubilation. Legend is cultural specialty of the state of Maharashtra and is a compulsory part of any communal celebration. Legend requires people to come together and synergize to bring out a rhythmic performance. Young students, when indulged into the beats, acquire the physical fitness and social skills at once. So let's get ready to behold a mind-blowing Legion dance and invite a group of students who would perform with legend and also ready to excite us on dhol and kashas. So let's welcome them among the huge round of applause.
when we are witnessing national unity with all social, political and economic classes coming together to join the Amrit Mahotsav. And it is overwhelming to see everywhere, everyone's praying Amritam Gamaya, which means to take us from darkness to light and from mortality to immortality. India is celebrating this special year with the theme Nation First, Always First, which essentially means to prioritize country's good over our personal agendas. So children, always keep the nation first in all your thoughts and endeavors. Ladies and gentlemen, now we would like to call the students from across the sections to showcase their love for their country in the form of cultural performances. In this colorful segment, coming up first are the students from standard 2nd and 3rd. I would request my friend Indrakshi Das to introduce them and convene the program further. A very bright, colorful and joyous morning to all of you. Our flag doesn't fly because of the wind. It flies because of every breath of a dying soldier. While we have gathered to celebrate Independence Day, I take this opportunity to speak about the symbol of our independence, the national flag of India. Our Tiranga not only signifies independence, but also the courage, unity, prosperity of the people, as well as tranquility, fertility, and serenity of our motherland. It is an indication that we are free and united and always on guard against any external invasion. On this grand occasion of 75 years of India's independence, Adanya Sheikh from grade 1, Devansh Dattani, Kavya Bhatkar, Shivam Solaskar from grade 2, Anika Patil, Srijan Kulkarni and Shrisha Hamdapurkar from grade 3 will talk and glorify our national flag. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause and boost their confidence. Good morning everyone. Happy 76th Independence Day to all. The first national flag of India was hoisted on August 7, 1906 in the Parsi Bagan Square in Kolkata. The second flag was hoisted by Rikachi Kama in Paris and was later exhibited in Berlin at Bonn. This was very similar to the fourth set, that the top strip had only one lotus and 7 stars, denoting the Saptarishi. The third flag was hoisted by Dr. Adi Besant and Lokmanya Tilak during the Home Rule movement and was the third flag modified in Arob. This flag was hoisted by the third flag. This flag had 5 red and 4 green horizontal stripes arranged alternately
with 7 stars in the Saptarishi superimposed on them. During the session of the All India Congress Committee, which met at Bejwada in 1921, a young man from Andhra, Pingali Venkaya, presented this flag to Gandhiji. It was only after his suggestion that a white strip and charkha was added. It was made up of 2 colors, red and green, representing the 2 major communities that are Hindus and Muslims. Indian National Flag, 1931. A resolution was passed in 1931 to adopt a tricolor flag as our national flag, which became the landmark in Indian history. The Indian National Congress, IC, formally adopted this flag, which was first hoisted on August 31st. Indian National Flag 1947 to now. This flag, which was born on July 22, 1947, was first hoisted at the Council House on August 15, 1947. Since then, we have this tricolor as the representation of India all over the world. The national flag of India is a horizontal tricolor of deep saffron kesari colored at the top, white in the middle, and dark green at the bottom in equal proportion. Our future truly lies in the great hands. I'm sure you all are amazed to see the confidence and pride with which they spoke. Following the end of British rule on 15th August 1947, the newly independent Dominion of India adopted an official state emblem. The national emblem represents the philosophy of the Constitution while signifying the country's power. Most of the Indian states and union territories use the national emblem of India with the text legend as their official governmental seal. To speak more on the national emblem, we have Aditya Pathak and Himanshu Jha from grade 3 amongst us today. Emblem means a distinctive badge of a nation. The state emblem of India is the national emblem of Republic of India. The emblem is an adaptation of lion capital of Ashoka. It was adopted on 26 January 1950. The statue is a 3-dimensional emblem showing 4 lions standing back to back on a circular abacus. The abacus has sculpture of an elephant to the east, a horse to the west, a bull to the south, and a lion to the north. These are separated by wheels in between called Ashok Chakra. The lotus was removed from the emblem, and instead the motto Satyamev Jayate, meaning truth alone triumphs, was inspired below the emblem. It was designed by Mr. Dinanath Bhargava. Thank you. And once again, happy 76th Independence Day. It was quite an informative speech. I thank them on behalf of everyone for enlightening us. As we hoist the national flag today, let's hope the tricolors with vibrant hues spread their wings high above the sky. A happy Independence Day to all of you. Thank you. Thank you so much, children. Thank you so much, children, for sharing such rarely known historical facts about our national flag, Tiranga.
and national emblem. Let's give them a huge round of applause once again. We believe that the seed of patriotic values. We believe that the seed of patriotic values must be sown into younger generation if we want them to orchestrate the change and materialize a brighter nation. Inculcating these values during their building years would lay an unshakable foundation in the form of strong character that is ready for any challenges. And hence, we educate them about multiple national symbols and their significance. It's now my proud privilege to call upon our pre-primary children to present their speeches about India's national animal, national bird, national tree, national flower, national fruit and national sport. Let's welcome them among a huge round of applause. Good morning, everyone. Happy Independence Day. I am Avani More from Senior KG Lily class. I am going to tell about our national animal. Royal Bengal tiger is our national animal. Tiger is wild animal, orange and black color stripes on its body. Tiger is very strong and powerful and intelligent. Thank you. Morning everyone. Very happy Independence Day. My name is Mario Mahesh Deshpande. I study in senior KG Lily class. Today I am going to tell you about our national bird. Peacock is our national bird. It has bright and colorful feathers. They like to dance in the rain. They are sacred birds in Indian culture and tradition. Thank you. Good morning, everyone. My name is Sadiri Shelte from Senior KG Road. Happy, this is a
by drinking mango juice. Bharat Mata ki jai. Good morning everyone. My name is Vinaya Mukherjee from senior KG after class. Our national game is hockey. Did you know our national hockey team won 8 gold medals in Olympics? India is the most successful team in the world. India's pride, Dhyan Chand, is known as the best hockey player. Thank you. Thank you so much, students, for sharing really valuable information about our national symbols. Let's thank them with a huge round of applause once again. And let me also congratulate them for the sheer confidence and boldness that they've been able to display at such tender age. So let's move on. Today, it fills our heart with pride as we retrospect the past 75 years of pursuit of a dream that was seen by our ancestors. A dream to be able to write our destiny, to be a united sovereign nation, a dream to live with dignity, to be able to prosper together, a dream to be self-sufficient and strong enough to defend our territories, a dream to restore and reclaim India's position as a world teacher of universal peace and brotherhood. As their heirs, it's our responsibility to strive towards fulfilling this dream. And so in DSK school, we decided to identify our lineage, understand the long tradition of serving the nation that we have inherited from our forefathers, and prepare ourselves to be worthy of it. In the lines of my country, my lineage, we are driving a mission of exploring the personal stories of freedom struggle hailing from our own families. And I'm glad to share that as a result of this, many students have come up with so many inspiring tales of nationalism from their parents and grandparents. So it's a really proud experience for all of us taking part in the movement called as My Country, My Lineage. Students discovered that the very wish of their forefathers being, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, and resounding with nation first, always first, our students now would like to dance to this wish. Let me call upon the students to celebrate the spirit of nation first with their dance performance. Move back. Yes, it's correct. January. से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। Thank you very much, students, for such emotional and soulful dance performance. Thank you very much and congratulations once again. Every blow aimed at me is a nail in the coffin of British imperialism. I do not know whether I shall remain, but you should never worry. My spirit after me will go on exhorting you to make more sacrifices for liberty. Those were the fiery words of one of the greatest freedom fighters, Lala Lajpat Rai, who was also known as Punjab Kesari. Protesting the Simon Commission with thousands of countrymen, Lalaji was inflicted a brutal lathi charge by the Britishers and ultimately succumbed to his injuries. But the words uttered by him, intense enough to give goosebumps to us even today, inspired many Indians to rise against the oppressors in a non-violent and united way. Such were our freedom fighters, and they would like to talk to us today after 75 years. So what do you think they would tell you today if they were here? Freedom fighters like Netaji Subhash Chandra Bose and Swatantra Veer Savarkar have today come with us and would like to talk to our students. The students from secondary section have done extensive research about the ideologies propagated by these legends, and they would like to declaim their speeches for us. I would like to invite Harsh Yadav of class 10th to come and declaim his favorite national hero for us.
मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज यहाँ आजादी के 75 साल बाद भारत के न्याय, समता और स्वतंत्रता पर एक नया पैगाम देने आया हूँ। हम सबको नव भारत के नव निर्माण का सपना साकार करना है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज के युवाओं को आराम मतलब जिंदगी और एक अच्छी नौकरी की चाह होती है, लेकिन जीवन एक संघर्ष है और हमें उससे निरंतर जूझना है। हमें हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। और अगर हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके प्रति शिद्दत से प्रयास करनी ही चाहिए। अपने ध्येय और कर्तव्य को पाने के लिए जी जान लगाकर, खून पसीना एक करके हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना ही है। चाहे कुछ भी हो, हमें हमारे लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रति जागरूक रहकर उसकी ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ऐसे ही कदम कदम बढ़ाते हुए हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना ही है। भगवान ने हमें ताकत, जोश और बहादुरी दी है, जिससे हम हमारे मर्जी के मुताबिक हमारा लक्ष्य चुन सकते हैं और उस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन उस मार्ग पर बहुत सारी मुश्किलें और मुसीबतें तो आएंगी ही, लेकिन हमें उन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंचना ही है। आजादी के 75 साल बाद भी जिन लोगों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए उनके विचारों से युवाओं को संगठित किया और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरह से हमें उनके विचारों को जीवित रखकर हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। एकता में शक्ति होती है और अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। याद रखिएगा, एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसके विचार नहीं। उसके विचार हजारों व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें उसी तरह से उन स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को जीवित रखकर हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलो उठो, जागरूक हो जाओ और सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं। आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत का आनंद ले रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम भी हमारे देश के लिए कुछ कर दिखाएं। हम हमारे दिलों में देशभक्ति जगाएं। तो चलो आओ नव भारत के नव निर्माण का संकल्प करें। तो बोलो मेरे साथ, भारत माता की वंदे। Thank you so much, Harsh, and let me sincerely congratulate you for inspiring all of us today. That was very apt message that was given to us by Netaji. Now, I would like to invite Harsh Datar of class 9 on the stage and declaim his famous national hero. वंदे 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 वंदे। हो मुलांनो, तुमच्यातला राष्ट्राभिमान पाहून मला माझे दिवस आठवले. तुम्हाला काय वाटतं, आपण आज जे स्वातंत्र्य उपभोगतोय ते आपल्याला सहजासहजी मिळाले नाही. माझ्यासोबत अनेक वीरांनी या स्वातंत्र्याच्या यज्ञकुंडात आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि मला खात्री आहे की तुम्ही त्यांचंही बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. मित्रांनो, आपल्या या मायभूमीने स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक आक्रमणांचे चटके सहन केले. याचं कारण होतं आपल्या स्वातंत्र्य देवतेकडे केलं गेलेलं दुर्लक्ष. कोटी कोटी देवतांची उपासना करणारे माझे बांधव या देवतेकडे मात्र कायम दुर्लक्ष करत राहिले. यामुळे आपल्याकडे शक्ती, बुद्धी आणि संपत्ती असूनही आपल्या नशिबी नेहमी पारतंत्र्यच आले. मग मात्र आम्ही ठरवलं की आता जर या परदास्याच्या बेडीतून मुक्त व्हायचं असेल तर राष्ट्रभक्तीचा स्वाभिमान जागृत केला पाहिजे. याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आम्ही केलेली विदेशी कपड्यांची होळी. बाजार बाजार म्हणून आपल्या देशात घुसणारे हे इंग्रज जेव्हा आपल्यावरच अधिकार आणि हक्क गाजवू लागले तेव्हा त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज वाटू लागली. इंग्रजांना जर भारतातून हाकलायचं असेल तर हवा जाज्वल्य राष्ट्राभिमान.
म्हणूनच आम्ही केली विदेशी कपड्यांची होळ. मुलांनो, तुम्ही सांगा, आपल्याकडे बुद्धी असताना, आपली पात्रता असताना, आपल्याकडे वेगवेगळी साधनं उपलब्ध असताना आपण दुसऱ्यांच्या तिजोऱ्या का भरायच्या? आपल्याकडे काश्मीरच्या शाली, नागपूरची रेशीम अशी भरपूर संपत्ती उपलब्ध असताना आपण विदेशी कापडे विकत घेण्याचा मूर्खपणा का करायचा? म्हणून मुलांनो, स्वदेशीचा वापर करा, आपल्याच बांधवांसाठी रोजगार निर्मिती करा, आपल्या माणसांना मदत करा आणि आपल्या या उच्च शिक्षणाचा उपयोग आपल्याच देशाच्या प्रगतीसाठी करा. हे मातृभूमी तुझसाठी मरण ते जनन, तुझं विण जनन ते मरण या वचनाचा ठसा प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयावर कोरला गेलाच पाहिजे. म्हणून मित्रांनो, नवनवीन गोष्टी आत्मसात करून त्यांचा उपयोग आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी करा आणि आपल्या हृदयातील राष्ट्राभिमानाच्या ज्वाळा कधीही विझू देऊ नका. आपला देश भारत जर साऱ्या विश्वात तेजाने तळपत राहावा असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर स्वदेशी वस्तूंप्रमाणे आपली भाषा, आपली संस्कृती, आपली परंपरा आणि आपला इतिहास याचा सार्थ अभिमान बाळगला पाहिजे. आणि अशाच स्वाभिमानाचं स्फुल्लिंग प्रज्वलित झालेला समाजच निर्माण करेल एक सामर्थ्य संपन्न आणि तेजस्वी भारत. बोला वंदे वंदे वंदे. धन्यवाद. Thank you so much to both the horses. नमस्कार. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्री केशरी रंग शोभे तुझा पांढरा बाहला चित्त लोभे हिरवा तिचा दे शांती मनाला नमस्कार माझा तिरंगी बजाला. अगदी या श्लोकाप्रमाणेच विविधतेत एकतेचे प्रतीक असलेला आपला राष्ट्रध्वज फार सन्माननीय मानला जातो. राष्ट्रध्वज हे राष्ट्राचे एक प्रातिनिधिक स्वरूप असते. त्यामुळे खेळाडू, भारतीय सैनिक यांची शान वाढवतो. तसेच हे देशाचे एक प्रतिरूप असते. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने त्याचा सन्मान करणे गरजेचे आहे. अशा या उंच आकाशात फडकणाऱ्या तिरंग्याला त्रिवार वंदन करून सादर करत आहोत उंच उंच गगनात तिरंगा डौलाने फडकतो. डौलाने
स्वाधीनता दिवस की इस अमृत महोत्सव की अमृत बेला में आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार। पूरे विश्व में अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध देश भारत में जहाँ प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग भाषा, अपना अलग पहनावा, अपनी अलग खान पान और भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वहीं नृत्य संगीत भी अपनी अलग छटा बिखेरता है। भारत के विविधता में एकता, इस विशेषता के अंतर्गत हमारे छात्र आपके समक्ष हिंदुस्तान की झांकी के रूप में कुछ प्रांतों की झलक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम भारत का सिरमौर उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हमारे ये छात्र उत्तर भारत का सिरमौर, जहां उत्तर भारत में स्थित कुछ राज्यों की श्रृंखला में सर्वप्रथम प्रस्तुत है कश्मीर राज्य। कश्मीर राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुरम्य स्थानों के सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं यहाँ की कश्मीर की घाटी, झीलें और बगीचे प्रसिद्ध हैं, इसीलिए तो इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आगे चलते हैं। अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक यह प्रदेश, जहाँ 5 नदियों झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज और ब्यास नदी मिलती है। पंजाब इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। किरण बेदी, जी हाँ, आपने सही सुना, किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी पंजाब से ही है। भारत का उत्तर पश्चिम राज्य, जी हाँ, प्रस्तुत है भारत का उत्तर पश्चिम राज्य हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हरित क्रांति, जी हाँ, ये पहचान है हमारे हरियाणा की। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में यहाँ के खिलाड़ियों ने भारत को अपनी अलग पहचान बनाई है। वहीं इस राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि उत्तर भारत में स्थित राज्य हैं। वहीं यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं में प्रमुख हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, उर्दू, अवधी, मैथिली और अंग्रेजी है। चलते हैं भारत के दक्षिणी छोर की ओर। दक्षिण भारत 5 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये प्रांत हैं। वहीं इसके साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी। दक्षिण भारतीय लोग मुख्यतः द्रविड़ भाषाएं जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम बोलते हैं। प्रदेशों की श्रृंखला में सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। इस राज्य की राजधानी बंगलुरु है। यह शहर भारत में हो रही त्वरित आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी का अग्रणी योगदान करता रहा है। आते हैं केरल राज्य की ओर। केरल भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित यह राज्य, इस राज्य का गठन 1 नवंबर सन 1956 में हुआ था। भारत में केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल को नारियल के पेड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आते हैं प्राकृतिक सौंदर्यता बिखेरे हुए यह राज्य तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु प्राचीन काल में इस प्रदेश में कई राजवंशों ने शासन किया है। इस राज्य की राजधानी चेन्नई है। यह राज्य अपने प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पूर्वी छोर, पूर्व भारत का प्रतिनिधित्व करते हमारे ये छात्र। पूर्व भारत
में स्थित प्रदेशों की श्रृंखला में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि राज्य आते हैं। यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में प्रमुख हिंदी, संताली, बांग्ला, उड़िया, उर्दू और मैथिली है। यहाँ के बड़े शहरों में कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, भुवनेश्वर, पटना, बोकारो, कटक और राउरकेला है। तो चलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के संगीत की भूमि पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल यह राज्य अपने प्राकृतिक और सौंदर्य का केंद्र रहा है। वहीं इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 में हुई थी। इस राज्य की राजधानी कलकत्ता है। आते हैं आसाम की ओर। यह राज्य चारों ओर से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस प्रदेश की सीमाएं भूटान तथा बांग्लादेश जैसे देशों से जुड़ी हुई है। प्रदेश के पूर्व में नागालैंड, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा दक्षिण में मिजोरम और मेघालय राज्य है। इस प्रदेश की राजधानी दिसपुर है। आगे चलते हैं नागालैंड की ओर। नागालैंड एक खूबसूरत राज्य जो कि भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। नागालैंड को इसके उपनाम लैंड ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की स्थापना 1 दिसंबर सन 1963 में हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा शहर है जो कि भारत के उत्तर पूर्व में अपने आकर्षण का केंद्र है। नागालैंड राज्य अपनी कला और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। चलते हैं भारत के पश्चिमी छोर की ओर। पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में स्थित प्रदेशों की श्रृंखला में सर्वप्रथम है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्य। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला में दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात राज्य जो अपने गरबा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इस राज्य का गठन 1 मई सन 1960 को हुआ था। इस राज्य की सीमाएं उत्तर सीमा राजस्थान, पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से लगी हुई है। यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं में गुजराती है। आगे चलते हैं अरब की खाड़ी के किनारे स्थित यह राज्य गोवा। गोवा 30 मई 1987 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। इस राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगी हुई हैं। इस राज्य की राजधानी पणजी है। आगे यहाँ बोले जाने वाली भाषाओं में मराठी, अंग्रेजी, हिंदी प्रमुख है। आते हैं महाराष्ट्र, भारत का दक्षिण पश्चिम राज्य। महाराष्ट्र के एक महान राजा और रणनीतिकार शिवाजी महाराज, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में महाराष्ट्र साम्राज्य की नींव रखी। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य लावणी, तमाशा, लेजिम है। मराठी महाराष्ट्र की राजकीय भाषा है। इसके अलावा यहाँ हिंदी और कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। छात्रों के इस प्रदर्शन को देखकर मुझे जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां याद आती है कि मातृ तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमात्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, वंदे मातरम।
Thank you so much from middle school for presenting in front of us the varied cultural heritage of our proud nation. Let's give them a huge round of applause once again. So, ladies and gentlemen, students, now on this auspicious occasion, I would like to now request the captain of our ship, our beloved principal, Mrs. Sundari Jaishankar, to share her thoughts with us. So please be ready. My dear students, parents, teachers, staff, and I could see some past pupils over there, wish you all a very happy 76th Independence Day. "75 years of incredible journey. A country which was rich, was looted, suppressed, but with all its mighty satyagraha, it got liberated, and finally a new free India was born on 15th of August 1947. Our humble journey started then with 340 million people. The people were not much educated, but they were courageous, they were confident, and they were willing to work very hard to take our country forward. To begin the journey, the great Indian leaders thought that the power lies in the hands of the people. Hence, India became a democratic country. Today, India is still the largest democracy in the entire world, and we should be proud of it. When we say democracy, it is by the people, for the people. The power the people have within. The people of India were given the rights to vote. Right from 1947 till now, the elections were conducted systematically. Not even a single time the elections were missed. This is a testimony of the democracy that we have in our country. And children, you are the future generation, and you have to carry on the spirit of democracy further. So when the people were ready to work harder, what then is the dream to see a new India, a progressed India. So the visionary leaders with the intellects of our country laid the way to the progress new India. And the people joined this movement, I would say, that is progress, development. In this journey, our country saw many revolutions. The most important one is the Industrial Revolution, followed by the revolution in the field of agriculture, dairy farming, aqua farming, and many other fields. So all these revolutions helped our country to transform into a self-reliant country. When we began a journey, we were dependent, but now we are self-reliant. The economy improved. The people got better infrastructure. For any country to get progress or get developed, what is important is the literacy. So only the educated people, only the literate
citizen can bring a good or faster development. So our country focused on literacy. Children, when we started the journey in 1947, very low, that is less number of people were educated. I would say it is less than 3% of the literacy. But today, we have achieved 74% of the literacy. So the government focused on the mass compulsory education and opened many higher education institutes. So what happened is now the younger generations, or I would say the younger professionals from our country, that is India, they are the CEOs of the leading world organizations. So this is the testimony of our, the development that took place in the field of education. The most important one is the healthcare. So in 1947, if you see the status of the healthcare, so the India was, the citizens, they did not have the much facility. But now, you see the healthcare system that we have in our country. The recent pandemic, when the world was finding the solution for that, India started producing the vaccine and gave the vaccines to all our citizens. And not only that, I started giving vaccine to the other people all over the world. Now, how this was possible? This was possible only because of the foresightedness of our leaders, along with them the intellects, and the most importantly, the common people. Now, India has grown stronger and has established its own place on the world stage. Even the powerful country wants India to be their partners. Children, how do you think that this would have been possible? Was it a dream? Was it a magic? Did it all happen in a day or two? No, 75 years. 75 years of the hard work of the people, the common people. The 75 years of the sacrifices that the people have made. Now, when we say the development and the growth, is it only the government? No. Now, if your parents are working in the government organization, they contribute to the welfare of the citizens. If they are the engineers, they contribute to the development of the infrastructure. So if they are in the medical field, then healthcare sector. And if they are the teachers, they are, preparing the citizens for the future India. So each and every person, the citizen of our country, contribute to the development of this great nation. So when we say that I'm so and so, I have this profession, I work for my family. Yes, when we work for the family, we work for our country. Let us say like this: I work for my nation. When I work for my nation, my family is taken care. So when we say that I work for the nation, then my contribution would be 100%. And I have the pride saying that I am working for my nation, for the progress of my nation. Children, you are in school right now. After the school education, you will be going for the higher studies, and later on you will be choosing a different profession. Whichever profession you may be, but have the thought that like you are contributing or you are working for the development of the country. Keep always the country in the first place. India first, always first. Have the confidence, have the courage, work very hard, and then contribute to the development of our country. Each and every Indian born in this country is committed to the development of this nation. So we are not exceptional. So let us work very hard
and see a new, strong, and a progressed India. So, what should be the motto of your life is India first, always first. Bharat Mata ki! Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. And today I can't help but miss our beloved Vice President, Mrs. Uma Panse, also, who always makes our day very special with her inspiring stories. But unfortunately, due to her health, she is not present today. But we'll ensure that as soon as she returns, we don't miss our dose of motivation from her, right? And ma'am has already conveyed her best wishes and blessings on 76th Independence Day, and let's hope that we see her very soon in the best of health. Now with that, we have come to an end of today's program, but I wish that the celebration of nationalism would be perpetual in our hearts and minds, and the coming generation watch India soaring new heights of success. On this note, let me take your leave. Happy Independence Day once again. Jai Hind.